मार्केट में अच्छे सेल्फ हेल्प बुक्स तो बहुत सारे हैं, but there is only one book which gives you a brutal reality check. Especially for someone in their teenage or 20s, this book covers various aspects of life, such as handling your emotions and dealing with people who give you a crap. बस यही नहीं, खुद पे काम करने से लेके it even questions some hard truths such as bad parenting and blindly influencers को follow करना. It covers it all. Now let me share how it changed my mindset and freed my mind. There is this one chapter which says people are weird. Without a doubt ये मेरा favorite chapter बन गया because it covers the most basic problem we face when dealing with people. कई बार होता है कि we set some expectations from our friend or partner and then when they behave unexpectedly तो हम upset हो जाते हैं. In fact, book में बड़ा अच्छा example दिया था कि sometimes you do everything right and still people reject you sometimes. ऐसा क्यों होता है? So बड़ा ही practical answer देते हुए the book says that sometimes when you're dealing with people जिसके साथ open communication नहीं हो रहा और जिसको आप जानते भी नहीं हो, you cannot understand कि उन्होंने ऐसा क्यों किया because you don't have enough data. In this scenario, it's stupid to get upset and the only logical thing is to say that people are weird. So instead of being upset, you should focus on what you can improve and maybe take a lesson. Another thing that the book covers is killing your individuality. मैं इस प्रिंसिपल से काफ़ी रिलेट कर पाया बिकॉज यू नो आई एम अ मिडिल क्लास गाय जिसका स्कूल में साइंस बैकग्राउंड था एंड वी डिड नॉट एग्जैक्टली गेट टू मेनी ऑप्शंस. हमारी सोसाइटी एंड एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि साइंस में हो तो जेईई या नीट कर लो एंड देन फिर जॉब. गिव मी अ ब्रेक. शुरू से ही मुझे इंटरेस्ट था इन हेल्थ एंड फिटनेस एंड आई वांटेड टू परस्यू फिटनेस साइंसेस. बट अपने बैच में आई वाज द ओनली स्टूडेंट चूजिंग अ फील्ड आउट ऑफ इंटरेस्ट. बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स वेंट फॉर इंजीनियरिंग. यहाँ तक कि द फैक्ट दैट आई चोज माई पैशन डिड नॉट मेक सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई स्कूल प्रिंसिपल. यू नो वॉट शी टोल्ड मी जब मैंने उनसे ये शेयर किया? शी सेड दैट आई एम वरीड फॉर यू, व्हाई डोंट यू चूज अ गुड डिग्री. अभी या तो मैं बकरियों की तरह यहाँ चला जाता या फिर खुद का रास्ता खुद बनाता. आई चोज माई ओन वे एंड वेंट टू दिल्ली. फिर वहाँ से आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिजिटल स्किल्स एंड सालों की मेहनत के बाद टुडे आई एम हियर. दिस इज व्हाट द बुक टीचेस यू कि लोग तो बोलते ही रहेंगे बट यू हैव टू मेंटेन योर ओन इंडिविजुअलिटी. अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बुक सेज यू आर अ नेशन. अब ये सुनने में काफ़ी वियर्ड लगेगा बट इट्स माइंड ब्लोइंग. द बुक एक्सप्लेन्स कि आप खुद में ही एक नेशन है. So the first step is to understanding and knowing yourself. Then you have to set some rules or let's say moral principles. Because अगर एक nation को function करना है तो they need rules. अगर rules नहीं होंगे तो as a person you will tend to start losing control over your bad habits and urges. Next, you must have self-respect, which is like the boundary of your nation. अगर ये boundaries नहीं होंगे तो people will manipulate you and start taking advantage of you. Just like a nation जिसके enemies उस पे attack करते हैं if the boundaries are not strong. Lastly, the book says that जैसे एक nation के foreign policies होते हैं वैसे ही you have to have a code of conduct about dealing with other people. You have to be in control and have authority over your life because किसी और को impress करने के चक्कर में अगर उन्हें authority दे दिया then it will start hurting you and now that person will be in charge of how you feel. Another wonderful aspect of the book is that it stresses on how to think and not what to think. मतलब कि the book encourages you कि किसी को भी blindly follow मत करो and start using your own brain for judgment. हमें अक्सर बचपन से ये सिखाया जाता है what to think and not how to think. अगर ऐसा हुआ तो we won't have the capacity to use our own judgment and solve a problem. बस दूसरों के सिखाए beliefs पे तुम life lead करोगे even if those beliefs are wrong. The same thing happens when you're following your favorite celebrity or sports star.
हम उनको भगवान मानने लगते हैं एंड वी थिंक दैट वो जो भी बोले वो सही ही होगा। बट वेरी फ्यू अंडरस्टैंड दैट किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने से बेटर है कि आप उनकी पॉजिटिव चीज़ें उनसे सीख लो and realize that वो जो भी बोले सब सही नहीं होगा, because they are also humans, not God. If you're finding this video valuable, hit on the subscribe button so you don't miss out on more content like this. So when you start questioning things and using your own thought process, life काफी आसान हो जाता है, because you can now deal with failures, rejections and negative people. So I read the rudest book ever during my college days. एंड ये मुझे इतना रिलेटेबल लगा कि इट सेट मी ऑन द राइट ट्रैक। स्पेशली फॉर अ टीनेजर, दिस बुक गिव्स यू दैट मैच्योरिटी which saves you from so much of hurt and negative influences in life. You really learn what your priorities are and how baseless some of those reasons are जिससे तुम upset हो जाते हो. If you have not read this book, then you should give it a try, because I bet you must or will face tough situations in life, and this book gives you that perspective जो शायद by default हमारे पास नहीं होता. I will leave the link of the book in the description. If you made it this far and are interested in reading books related to business, then check out my book review on 100 Million Offers.